Hello student, this is ELGA 13, Unit 1, Day 2, and as we always do, we will start our today's class with phonics section. In last class, we learned two phonics sound, that is SC which make a sound of S and WR which make a sound of R, and today you have to guess the right phonics sound. For that, you have to open WS3. Question 2. Fill in the blanks with the correct sound. Picture given है, आपको picture देखनी है, then you have to fill the correct word. So this is Caesar. Sir. Caesar. Second is wrist. For that we will write WR. Wrist. This is wrapper. So we will write WR. Wrestle. So it will be WR. Scientist. And the last one is scenery. Okay students. So now we will do whole word. For this section you have to open WS1. In the last video whole word section में हमने synonym पढ़े थे. आज हम उन्हीं की practice करेंगे. You have to read the following sentences and underline the words that have similar meaning and write them in the space provided below. One example given है जैसे कि that was so quick. I never seen the result so fast. Quick and fast synonyms है तो उसे इस तरीके से write करना है. इसी तरीके से जो आगे क्वेश्चंस गिवन है जो ऑप्शंस जो ABCD एक्सरसाइज के पॉइंट्स हैं इनमें फाइंड करना है सिनोनिम एंड देन यू हैव टू राइट ऑन द गिवन स्पेस. Rohan likes to keep his room neat and tidy. So neat and tidy are synonym. So we will write neat, tidy. Okay. The next is the room started to get hot when they turned up the heat. So in this hot and heat are synonyms. He made a very humble request. It makes me think that he is respectful of other. In this humble and respectful are synonym. In this chilly weather my feet are getting cold. So chilly and cold are synonym. Okay, so you have to write these synonym on the given space in your workbook. We will do some more practice of these synonym. For that, open WS4. In this, you have to tick the synonym of the underlined word in each sentence. यहाँ आपको options given and you have to choose the correct one. For example, first is I went on trip with my family. Trip यहाँ underline है and you have to choose the synonym of trip. To give, take, fall or journey. तो ट्रिप का सिनोनिम है जर्नी. A bird flew above my head. Options are over, under, below, far away. So the correct answer is over. Okay. Similarly, next is our family lives in a happy house. House का सिनोनिम home, park, library, school. हाउस का सिनोनिम क्या होगा होम. शीतल likes to take the stairs more than the lift. Options are steps, ramp, incline, elevator, and the correct answer is steps. The synonym of stairs is steps. So students, you have to complete this on your own. As you know, आंसर की आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी है. Let's read some words in whole word section. Open SR26. Here some words are given like learning, until, however, decide, thought, example, different, became. So student, you have to read these words again on your own and try to make sentences from these words. Now it's time for the reading section.
For that, you have to open SR9. The name of the lesson is Mobile Phones on their Roller Coaster Ride. In this lesson, we will read about how mobile phones have changed over a period of time. आज जो मोबाइल फ़ोन हमें फैसिलिटी देते हैं, आज से कुछ साल पहले वो फैसिलिटीज़ नहीं थी. तो किस तरीके से फ़ोन में चेंजेस आए, क्या क्या चेंजेस आए, उनके नेम क्या है. तो इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स. Various types of phones are there, like 1G phone, 2G phone, 3G phone, 4G phone, and all these type of phones have their own features or characteristics. But before we read these characteristics, let's learn and read about what is 1G, 2G, 3G or 4G phone. So let's start reading the lesson now. First of all, we will read word meanings of this lesson. First word is luxury, means an expensive or desirable item. The BMW is a luxury car. Device, a thing made for a purpose. जो चीज़ किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? डिवाइस. फॉर एग्जाम्पल, अ फोन इज अ डिवाइस that lets us talk to other people. Okay, next is generation, one level in the improvement of technology. जब टेक्नोलॉजी में एक लेवल इम्प्रूवमेंट होती है, सुधार होता है, उसे क्या कहते हैं? जनरेशन. मारुति मेड अ न्यू जनरेशन ऑफ देयर कार. एप्लीकेशन, अ कंप्यूटर प्रोग्राम. जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं उसे क्या कहते हैं? एप्लीकेशन. एंड दीज आर पॉपुलरली नोन एज ऐप. यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम, राइट? इन योर मोबाइल फोन्स देयर आर सो मेनी एप्स. वी कैन कॉल फॉर अ टैक्सी यूजिंग अ फोन एप्लीकेशन, दैट इज फोन ऐप. एडवांसेस, हाई इम्प्रूवमेंट्स. व्हेन देयर इज very high improvement in something, we use the word advances. For example, advances in technology, that is high improvement in technology, allow us to watch live matches on TV. Smartphone, a mobile phone that can function as well as a computer. जो कंप्यूटर के फंक्शंस को भी परफॉर्म कर सकता है, that is what we call smartphone. but वो होता क्या है? एक मोबाइल फोन. Companies release new types of smartphones every year. Surprise, an unexpected event. My father came to school to surprise me. Now let's read the lesson. Mobile phones have become so common these days. It feels difficult to find a person who does not know how to use one. The speed with which mobile phones have grown in the last 30 years is amazing. आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन्स इतने कॉमन हो गए हैं कि सभी को ये चलाना आता है. और लास्ट 30 इयर्स में तो जो इनकी इम्प्रूवमेंट हुई है वो बहुत ही फास्ट है, अमेजिंग है. एट फर्स्ट, हैविंग अ मोबाइल फ़ोन वॉज अ लग्जरी. लग्जरी मीन्स an expensive thing, right? Or a desirable thing. The first mobile phones were beyond the reach of the common person. The first mobile phone was launched in 1983. It cost nearly $4,000. That is more than rupee 2 lakh today. It weighed 1 kilogram. The battery lasted an hour and it could store 30 numbers. These were the first generation mobile phones. They were popularly known as 1G mobile phones. First generation, that is 1G. और आज कौन सी जनरेशन के मोबाइल फ़ोन यूज़ होते हैं? 4G, राइट? दैट इज़ फोर्थ जनरेशन. तो जो पहला फ़ोन था वो 1983 में लॉन्च किया गया था और उसकी कॉस्ट अगर इंडियन रुपी में देखें तो मोर देन 2 लाख, और अगर हम डॉलर्स में देखें तो $4,000. एंड उसका वेट भी कितना था? 1 किलोग्राम. एंड मैनी अदर इन्फॉर्मेशन आर गिवन हियर.
However, it wasn't the first mobile phone. The Swedish police used the first mobile phone in 1946. The device was similar to a two-way radio. स्वीडिश पुलिस ने एक मोबाइल फ़ोन जैसा सिमिलर डिवाइस ही यूज़ किया था, जो एक टू वे रेडियो टाइप डिवाइस था. ठीक है, वी कैन नॉट से एग्जैक्टली मोबाइल फ़ोन, बट इट्स क्वाइट सिमिलर. और एक अब स्वीडिश पुलिस ने यूज़ किया था, 1946 में यूज़ किया था. इट वॉज एबल टू मेक 6 phone calls. With the help of this device, Swedish police can make 6 phone calls. The second generation phones came in the 1990s. तो जो 2G फ़ोन है वो कब आए? 1990s में. 1G फ़ोन तो 1983 में आए थे, है ना. और 1990s में कब आए? क्या आया? 2G मोबाइल फ़ोन. These phones were smaller and faster due to advance in technology. जो 2G मोबाइल है वो ज़्यादा फास्ट और एडवांस थे. Users now had short messaging service. यूज़र्स अब SMS कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन. दे कुड सेंड शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस. अगर उन्हें शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने, दे कैन सेंड दैट. दे कुड इवन सेंड वीडियोज़. दे हैड बेटर कॉल क्वालिटी. द यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स grew quickly at this time. At what time? At the time of 2G phones. Then internet services made mobile phones more useful. So students, अब जब ये फ़ोन आए थे, इससे SMS कर सकते थे, वीडियोस शेयर कर सकते थे, शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस शेयर कर सकते थे. तो जो टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस थी और इंटरनेट ने तो इसे और भी बेनिफिट दिया था. इन अ फ्यू ईयर्स द नेक्स्ट जनरेशन अराइव्ड. और कुछ सालों बाद न्यू जनरेशन आ गई. इट इज़ द जनरेशन ऑफ फोन्स वी सी अराउंड अस. दे आर सो एडवांस, वी कॉल देम smartphones. Thanks to the faster internet speed, we now use 4G phones. Today we are using 4G phones. Information flows so fast we can locate people in seconds. So, अब जो नेक्स्ट जनरेशन जो आज के टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? स्मार्टफोन्स बोलते हैं. और इंटरनेट की हाई स्पीड की वजह से हम क्या यूज़ कर रहे हैं? 4G phones. Even in some countries 5G, 6G, 7G, 8G भी अवेलेबल है. एंड अभी हमारी कंट्री में क्या अवेलेबल है? 4G. एंड आवर कंट्री इज मेकिंग प्लान फॉर 5G phones as well. Information flows so fast we can locate people in seconds. Further, people do not need to use cash to buy and sell things. All this is so easy to do using applications, and applications are popularly known as apps in smartphones. The journey of the mobile phone has been an exciting one. The future phones will bring even more surprises. So with the help of smartphone, we can locate people, we can send money, there's no need to do cash payment. We can do e-payments, electronic payments with the help of internet and smartphones, with the help of applications. So the journey of mobile phone was exciting one, and even it can bring so many surprises in future, right? Let's read some characteristics of all different type of phone, like 1G, 2G, 3G and 4G. So 1G phones were heavy. They have small screen and slow communication speed. यानी कि जब हम बात करते थे तो उसकी स्पीड बहुत स्लो थी. स्क्रीन भी छोटी थी एंड हैवी था. 2G phones light in weight. वेट में एज कम्पेयर टू 1G फोन लाइट थे. बिगर एंड कलर स्क्रीन. स्क्रीन बड़ी थी और कलरफुल भी थी. बेटर कम्युनिकेशन स्पीड एज कम्पेयर टू 1G फोन. स्पीड भी अच्छी हो गई थी. एंड फैसिलिटी ऑफ SMS एंड MMS, यानी टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते थे, शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज, और वीडियोस भी शेयर कर सकते थे. 3G फोन्स स्लिमर एंड लाइटर. ये और भी ज़्यादा स्लिम और लाइट थे. दे हैव टच स्क्रीन, फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट एंड faster communication speed. In 3G phone, one can avail the facility of internet and the speed of communication was also fast. And 4G phones, which we are currently using in India. Variety of application. There are various type of application we can use in 4G phones. 4G phones have touch screen,
It has fastest internet speed available in India, works as personal computer also. So that's it for this lesson, and as a homework you have to read and learn the question answer of this chapter. So that's it for today. Thank you.